Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English instructor and welcome to my English coaching class. Currently we are at unit number 12, Cultural Elegance. Our today's lecture is lecture number 5 and the competency that we are targeting through this lecture is oral communication. Our today's topic is speaking confidently and spontaneously. Let's have a look at the SLO first. Demonstrate increases personal confidence by managing and being able to adopt, change the content of the spoken presentation and listening. So, according to this SLO, we have to mold our speech when we are talking to a different type of audience or when we are in different scenarios or different situations. So, according to that particular situation or according to that audience, we need to change our speech. This is the vertical linkage. Before jumping onto the topic, let's have a quick brainstorming session. What makes you feel confident? So, can you please tell me what makes you feel confident? Is it about wearing a particular color that makes you feel confident, or is it about talking about a particular topic, or maybe talking to a special person that makes you feel confident, or talking in a particular scenario? What makes you feel confident? Let's learn about extempore speech. An extempore speech is an unprepared speech which the candidate is required to make on a topic given there and then. So, according to this definition, an extempore speech is a type of speech that a speaker has to deliver spontaneously. The speaker is unprepared for this kind of speech. He is given the topic on the spot and he has to prepare that speech and deliver that speech at that moment spontaneously. Next we have personal confidence. Personal confidence means believing in yourself and your abilities. It's the feeling that you can handle different situations, do things well and make good decisions. When you are confident, you trust yourself to solve problems, talk to others and face challenges without fear. Confidence grows when you practice and learn from your experiences. So, what is meant by personal confidence? Personal confidence means believing in yourself. And how does that belief come? When you have the ability and the capability to do something, when you trust yourself, that is how your confidence grows. Next we have different types of situations. So, in our daily lives, we face different type of situations and according to those situations, we have to react or we have to speak. Let's see what those situations are. Nervousness, audience reaction, unexpected interruptions, time pressure, technical difficulty, difficult questions, cultural differences and criticism. Just imagine, you are a speaker and you are about to speak to a large number of audience. What can make your confidence lower or what can boost your confidence? There have been many situations जिसकी वजह से आपका confidence lose हो सकता है. उसमें सबसे पहले है nervousness. हो सकता है वहां पे कोई 4000 लोग बैठे हों, एक लार्ज ऑडियंस हो जिसको आपने पहले फेस नहीं किया और स्पीकर नर्वस हो गया है या उससे स्पॉन्टेनियसली वो स्पीच डिलीवर नहीं हो रही. दिस इज व्हाट हिंडर्स योर स्पीच. उसके बाद है ऑडियंस का रिएक्शन. ऑडियंस का रिएक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है. अगर वो रिएक्शन पॉजिटिव है तो आपकी स्पीच बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगी और अगर वो रिएक्शन नेगेटिव है तो हो सकता है आपको अपनी स्पीच को मोल्ड करना पड़े या फिर आपको अपनी स्पीच को बहुत ज्यादा उस ऑडियंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़े. Unexpected interruptions. Sometimes when we are speaking, external environment में बहुत ज़्यादा interruption हमारी speech को मुतासिर कर सकती है. वो आउटडोर नॉइज हो सकता है, वो किसी भी किस्म का कोई मौसम की खराबी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है. Time pressure. Time pressure is quite crucial while we are delivering a speech because
एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर हमें उस स्पीच को डिलीवर करके खत्म करना है। सो टाइम प्रेशर जो है वो आपकी स्पीच को बहुत ज्यादा मुतासर करता है। आगे है टेक्निकल डिफिकल्टीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक ऐसी स्पीच दे रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं और किसी भी किस्म की टेक्निकल डिफिकल्टी अगर उन इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाती है तो भी आपकी स्पीच पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। आगे है डिफिकल्ट क्वेश्चंस और कल्चरल डिफरेंसेस एंड क्रिटिसिज्म। ये सब सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ऑडियंस आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछती है जो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट महसूस होते हैं, तो वो क्यों आपको डिफिकल्ट महसूस हो रहे हैं? हो सकता है कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से, हो सकता है आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं आपकी ऑडियंस उस कल्चर से बिलोंग ना करती हो और दैट इज वाई उनके वो क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट महसूस हो रहे हैं और वही डिफिकल्टी आपको क्रिटिसिज्म की तरफ लेके चली जाती है। आपको ये लग सकता है कि ऑडियंस की तरफ से पूछा गया वो सवाल शायद आप पे क्रिटिसाइज करने के लिए पूछा गया है। आगे देखते हैं मैनेजिंग द कंटेंट of presentation. So now we have seen different situations, but how to mold ourselves or how to mold our speech according to those situations. हमें क्या करना है अपनी स्पीच को बेहतर करने के लिए, फ्लुएंट बनाने के लिए? सबसे पहले organize your ideas clearly. You have to organize your ideas quite clearly because अगर आपके खुद के आइडियाज अमलगम का शिकार होंगे तो आप अपने आइडियाज को स्पॉन्टेनियसली और क्लियरली अपने ऑडियंस के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट है बी रेडी टू चेंज और एड कंटेंट बेस्ड ऑन योर ऑडियंसेस रिएक्शन। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी ऑडियंस आपकी उस स्पीच पर किस तरह से रिएक्ट कर रही है। इफ देयर इज अ पॉजिटिव रिएक्शन तो आप अपनी स्पीच को उसी हिसाब से लेके चलेंगे। इफ देयर इज अ नेगेटिव रिएक्शन तो आप अपनी स्पीच को मोल्ड करके ऑडियंस के रिएक्शन के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। Next is practice flexibility in delivering your message. You should not be rigid while delivering your message, while delivering a speech, because there is always room for flexibility. अपनी audience के interest, अपनी audience के involvement के according, you have to mold your speech. This is the classroom activity. Brainstorm yourself for a few minutes and give an extempore speech on the suggested topic. Deliver the speech by focusing on your fluency, verbal effectiveness, energy, eye contact, and gestures mark. Also, focus on your body language, confidence, pose, and composure. So, what you have to do in this activity, you are supposed to deliver an extempore speech on the topic, I am proud to be a Pakistani. So, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने एक एक्सटेम्पररी स्पीच प्रिपेयर करके डिलीवर करनी है। लेट्स हैव अ लुक एट योर होमवर्क। अगेन, brainstorm yourself for a few minutes and give an extempore speech on the suggested topic. Deliver the speech by focusing on your fluency, verbal effectiveness, energy, eye contact, and gestures more. Also, focus on your body language, confidence, pose, and composure. My country, my favorite city. So, here I have provided two topics for you. You are going to brainstorm some ideas about these particular topics spontaneously and then you have to deliver an extempore speech on any of these topics. Here we have provided the simulation for you for further understanding and this is the worksheet. You can attempt this worksheet for your further and comprehensive understanding. Apart from this worksheet and the simulation, we have provided different resources for you. Thank you so much, class.